हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आफ्टर द फेल्योर ऑफ बोयर्स एटॉमिक मॉडल एंड डेवलपमेंट ऑफ डी ब्रोगली concept of dual nature of particle as well as Heisenberg uncertainty principle, a new model has been established, has been developed by scientist Erwin Schrodinger. ठीक है, ये वेव मैकेनिकल मॉडल। Basically this model was based on de Broglie's concept of dual nature of particle. That is, what is the de Broglie concept of dual nature of particle? That means when any particle having mass m, speed v is in motion, then it has both particle as well as wave nature, and according to de Broglie equation we find out lambda is equal to h over m into v. That means when any particle having mass, if it is in motion, if it has some kinetic energy, then it has wavelength also. और इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि जैसे हम मान के चले we consider electron revolve in the orbit, then it must have some wave nature, that is it has some wavelength. Then according to the wave mechanical model it was based on de Broglie concept. That means when electrons revolve around the nucleus, it also have wave nature, that means the wavelength of the wave. Similarly, this model also based on the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle basically is the just opposite to the Bohr's atomic model. बेटा हमने पढ़ा था कि बोहर एटॉमिक मॉडल में Bohr atomic model के according electron revolves around the nucleus, then it has certain orbits which have definite angular momentum, definite position, definite energy of the orbit. ठीक है, but according to Heisenberg everything is uncertain within an atom. That means it is impossible to find out exact position and exact momentum of an electron in the orbit both simultaneously. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, दोनों को सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करना ये काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बल्कि अगर आप इनमें से किसी एक को सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करोगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। It's a relation uncertainty in position delta x, uncertainty in momentum delta p. It is found to be always equal to or greater than h over 4 pi. So overall we can say, according to this concept, moving electron has wave nature and it is uncertain to find out exact position and momentum of an electron within the orbit. ये कुछ स्टडी हुई, ठीक है,
आफ्टर द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था इट इज ट्रू ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. Bohr's atomic model explained only two-dimensional atomic model. Bohr's atomic model give the exact information about an electron within the orbit. Bohr's atomic model could not explain the concept of subshells or sub-energy levels. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट की स्टडी हुई, वेव एंड पार्टिकल नेचर में डिफरेंशिएशन हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में स्टडी की गई, तो फिर ये कंसेप्ट निकल के आया कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम का, एटम के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर ऑर्बिट में, ये एक वेव के फॉर्मेट में, 3D वेव फॉर्मेट में, और एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. It is uncertain to find out exact position and momentum. ठीक है. So the first of all, the main important point, conclusion of this one is that electron revolve around the nucleus in the certain orbits, but not in the circular path. It has 3D wave format. Its trajectory is a wave trajectory, and every wave path has its own equation mathematically. Erwin Schrodinger proposed that electron in an atom follows 3D wave path having wavelength lambda if amplitude of the wave is psi. This is the symbol PSI. हम एम्पलीट्यूड ए ले सकते थे, बट इन्होंने एक सिंबल बनाया कि अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड साई हो, देन del, this is the del partial differentiation, double differentiation of psi, del square psi over del x square with respect to x axis, del square psi with respect to y square. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, this is known as Schrodinger wave equation, where del square psi over del x square, it represents maximum electron finding probability with respect to x axis. This one is the maximum electron finding probability with respect to x axis. Similarly, this is the maximum electron finding probability with respect to y axis. We are talking about electron finding probability. Why? Because after all, it is uncertain to find out exact position where is the electron around the nucleus. So these are the maximum electron finding probabilities along x-axis, along y-axis, along z-axis, and this is the energy factor E minus V. E is the total energy of electron, V is the potential energy of electron, and psi represents the amplitude of the wave, psi square represent intensity of the wave, intensity of the wave or wave function. Basically यही वो चीज़ है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलती है विद इन द एटम. वेयर इज द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल we can find out by solving the Schrodinger wave equation. Its solution is not in our syllabus, but the overall concept indicates that, अब समझिए जरा, ये तो श्रोडिंगर ने वो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैजेक्टरी है वेव पाथ की उसकी इक्वेशन दी. इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, बट ओवरऑल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वी कैन से
अब मैं यहाँ पे इस मॉडल के बारे में बताता हूँ. According to this model, electron is present in the atom and it travels in the 3D wave path around the nucleus in the orbits, and around the nucleus there is maximum electron finding probability in the orbit called orbitals. Introduce the concept orbitals. मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस हैं, अराउंड द न्यूक्लियस 3D में एक स्पेस है, just like an electron cloud. We can't predict with certainty where is the electron, but we can predict that particular space where electron finding probability is maximum. It is nearly 90%. This particular portion is called orbitals. Okay, तो इन्होंने ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया and by solving Schrodinger wave equation we get some other information about an electron. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑर्बिट्स हैव ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स? It can be asked in the subjective as well as in the objective, but the basic difference is this. This is the circular path followed by an electron. According to Bohr, around the nucleus, these are the orbits, circular path. जिससे आपने और बोहर्स के मॉडल में KLMN और 1 2 3 4 इनको आपने एनर्जी लेवल्स भी कहा था. ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है. बट ऑर्बिटल इज व्हाट डिफाइंड एज 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है एक ऐसी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी 2n स्क्वायर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ऑर्बिटल आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. नाउ वी कैन से according to the wave mechanical model, electron revolves around the nucleus in the wave path. Electron revolves around the nucleus in the wave path and in the 3D wave path. So, and every wave path has its wave equation. Erwin Schrodinger tried to find out that the equation मैंने यहाँ पे mention की, but it is not necessary to learn about the equation. But when we solve this equation mathematically, we get a lot of information about an electron. That will give you the quantum mechanical model, but overall wave mechanical model gives us the information about an atom, that within the atom electron present in the orbit, but it move in the wave format in 3D wave path, and it is uncertain to predict about an electron within the orbit. We can say there is the possibility, there is the probability, there is the finding probability at a time where electron has maximum probability to find out
is maximum. That particular area or portion or region is called orbital. Maximum electron in an orbital may be equal to 2. Well, you can say orbitals should be present within the orbit. Basically, orbit is a main energy level. You can say orbit have sub-energy levels और sub-orbits, sub-shells. इसके बाद होंगे orbitals and orbitals के अंदर होंगे electrons. This concept is ultimately coming out. So in the next video I will discuss what is quantum mechanical model, that is the quantum numbers and shape of the subshells, orbitals, and how distribution of electrons according to the energy, that is how can we write electronic configuration. So wait for the next video. Till then, watch this one and read from the books the concept of wave mechanical model. Okay, dear students, thank you, thanks a lot.